So this afternoon I would like to continue the meditation that we began this morning. So in this particular practice, we use a particular variation familiar with, but in a slightly different way than you would normally use it, and using it as an initial mindfulness technique in order to ground awareness in the body, to familiarize oneself with the sensation of the breath in a more general, relaxed way, and to develop anicca sanya, the perception of impermanence at the beginning of the meditation. Following a certain period of this scanning the four areas of the body and the whole body, making 5 steps, then attention is turned to the sensation of the breath at one single point, which may be at the tip of the nose, within the nostrils, at the throat, the chest, the abdomen, depending on whichever point is most comfortable and in which it's easiest to observe the breath. So this is strengthening, clarifying power of mindfulness, and before the more subtle attention to the breath at the tip of the nose, for example. So now, together with the in-breath, and being aware of any sensations that spring up in consciousness in this first area, including the head, the face, the neck. And with the exhalation, whatever sensations become apparent in consciousness in this area of head, face, neck, we move on to the second area of the body, the shoulders, arms,
hands and fingers. As the breath comes into the body, as the breath leaves the body, the particular sensations and the pressure, the tingling sensation, throbbing sensations, warmth, coolness, whatever becomes present. The sensations present or conditioned by the inhalation, the sensations present conditioned by the exhalation. We're moving to the third area of the body, the torso, and covering the chest area, the abdomen, all the vital organs of the body, the spine, from the base of the neck all the way down to the tip of the spinal cord, the coccyx. Noticing, observing with a calm, dispassionate interest all the sensations associated with, conditioned by the inhalation, all the sensations associated with, conditioned by the exhalation. Feeling the expansion and the contraction of the lungs. Now the fourth area of the body, the hips, the bottom, the thighs, the knees, the calves, ankles, feet and toes. Just observing without comment, this calm, clear, dispassionate, interested gaze. The sensations of that part of the lower body
in contact with the floor, the seat, sense of warmth and pressure. Whatever sensations associated, conditioned by the inhalation, we observe without comment. Whatever sensations are present, associated with, conditioned by the exhalation, we merely observe, acknowledge without reaction. So developing this habit of clear-eyed, calm, unbiased acknowledgement of whatever appears in consciousness. And for the fifth step, we are aware without choosing, without focusing on a particular area, but full body awareness from the top of the head, the tips of the toes, simply aware, the mind bright and clear and interested and committed. To this knowing, clear knowing of whatever sensation arises throughout the body during the inhalation. Whatever sensation arises into consciousness through the body during the exhalation. You see that nothing's solid, nothing fixed. There's no owner, there's no controller. Just flow of phenomena. Now we can return to the awareness of sensation in the fourth area, the lower body from the hips down to the toes, the hips, the bottom, the thighs, the knees, the calves, the ankles, the feet, the toes. This whole lower part of the body
being aware without bias, without comment, of whatever arises and passes away, associated with, conditioned by the inhalation, associated with, conditioned by the exhalation. And the third area of the body, the torso, the chest, the abdomen, the lungs, vital organs, the spinal cord, the whole area of the back. So all any sensations that appear in consciousness without conscious direction, simply arising and passing away due to causes and conditions. Ownerless phenomena present in this area of the body, the torso. Those phenomena, those sensations associated with, conditioned by the inhalation, associated with, conditioned by the exhalation. Now the second area of the body, the shoulders, the arms, the hands, the fingers. There were sensations, pulsing, throbbing, tingling, sensations of warmth, of coolness, whatever may appear naturally due to prevailing causes and conditions associated with, conditioned by the breath, associated with, conditioned by the inhalation, by the exhalation. Calm, clear-eyed, dispassionate, interested gaze.
And the first area of the body, the head, top of the head, the sides of the head, the back of the head, the face, the forehead, the eyes, the nose, the cheeks, the ears, the lips, and above all the nose, the breath entering, the breath leaving. The mouth, the teeth, the tongue, the jaw, the neck, the front of the neck, the sides of the neck, the back of the neck. And you're aware of the sensations arising together with, associated with the inhalation, conditioned by the inhalation. And those phenomena, those sensations associated with, conditioned by the exhalation. Of the whole body awareness, from the top of the head down to the toes, without any directing, choosing, focusing, whatever sensation, wherever in the body, simply acknowledging it, awake to it, observing the phenomena, the sensation associated with, conditioned by the inhalation, associated with, conditioned by exhalation. Now we take one particular point in the body, which we simply observe the sensation of the breath as it enters and leaves the body.
Now, in order to create the best optimum of relationship between the mind and the object, we need to be content with the breath. And that contentment and interest can come from recognizing the value and the importance of this practice. Without practice of the Dhamma, we are condemned to wandering in samsara for endless lifetimes. Now we have the good fortune to be born in the human realm and to have the opportunity to practice the Dhamma. So we must make the best use of this time. So in observing the inhalation and the exhalation as they pass our chosen point, such as the end of the nose, we can divide the breath, inhalation, into three phases: the beginning, the middle, and the end, or the final phase. And the exhalation also. So our effort is to be mindful, to be awake, to be aware to the sensation of the breath for the full duration of the inhalation and exhalation, or of 6 phases, through the initial phase of the inhalation, the middle stretch, and the final phase of the inhalation. The initial phase of the exhalation, the middle phase, and the final phase. And this is our initial goal: one beautiful, complete, unbroken breath, one in which mindfulness is sustained, not too tight, not too loose, for the whole duration of the inhalation and the exhalation. And then we begin again, a new challenge. A new breath to give our interest, devotion, commitment to sustaining mindfulness through the initial, the middle, and the final phase of the inhalation. The initial, the middle, the median, the final phase of the exhalation. To create one beautiful, unblemished, mindful breath. And then to start again.
So remember to be checking every now and again, just check the posture, as the posture is straight but without being rigid. Checking the intensity of the effort, that it's not too tight, not too loose. And there has to be a constant, subtle fine-tuning or balancing of our effort. The word Buddha means awakened, and this is the heart of the Buddhist meditation practice, this sense of wakefulness. So whatever technique we are applying, the mind must be possessed of this wakeful, bright, sharp, interested state of mind. So we avoid this word concentration. We're not concentrating on anything, we are awakening to it. We are awakening to the nature of the inhalation. We are awakening to the nature of the exhalation.
So, for the next 45 minutes, there'll be opportunity to ask questions again or bring up any topics of discussion. Please feel free to ask anything you like. Yeah. Thank you, Ajahn, for the guided meditation. I have two questions regarding it. You gave the guided meditation for awareness of breath and sensation. So my question is, what is your advice on using it on daily life's problem? Like if I have defilement arising in my mind, let's say anger, and I'm aware about breath and sensation, and it's arising, passing. So can it lead to investigation? So that is my first question. And second question is, the awareness of breath and sensation, can it lead to breaking Sakkaya Ditthi that you talked about yesterday? Okay. First of all, I don't think that there's any that you can learn a meditation technique that can then be applied as a kind of a general antidote to problems in daily life, or that meditation technique should be evaluated in that way. So the meditation is just one part of the Eightfold Path or the Threefold Training. So let me begin by explaining what I would think is a good strategy of dealing with anger in daily life. Would you like to translate that? आपका प्रश्न था कि जो गाइडेड मेडिटेशन में सांस और संवेदना को देखना बताया, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। तो पूछ रहे थे कि ये जो इस तरह से साधना करते हैं, क्या इसको हमने दैनिक जीवन में डिफाइलमेंट्स ऐसे विकार जागते हैं, गुस्से का वगैरह, उसको हैंडल करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या इस तरह की साधना विधि सक्काय दिट्ठी तोड़ने में मदद आती है। तो आपने जो है कि कोई भी मेडिटेशन टेक्निक जो है वो एक अलग से चीज़ नहीं है जिसको कि आप कहीं अप्लाई करेंगे। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग का एक पार्ट है, और पूरा आठों आयाम जो है हमको पूरे करने पड़ते हैं, तभी हम मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। और फिर बताया कि गुस्से को हैंडल करने के लिए एक साधना वो बताएंगे अब। So in this integrated approach to problems such as anger, we are having to apply effort in three areas. So first area is in conduct, second area is in the heart or emotion, and third area is in wisdom, understanding, thinking. गुस्से के लिए आप कह रहे हैं कि तीन आयाम होते हैं जो हमको देखने चाहिए। एक हमारा व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है, दूसरे अपने जो हमारे इमोशंस जाते हैं, भावनाएं जाती हैं, और तीसरी हमारी समझ कितनी है, प्रज्ञा कितनी है। So in the area of conduct, are the particular tool that we make use of is our ability to refrain. So we are creatures, we all have instincts in the same way that animals and birds all have instincts. But what makes human beings special is that we have a reflective capacity. That is to say, we can see something, say this is something very attractive. We see it and this sense of attraction arises. It's nice. We want it. So this is just normal instinctive behavior of a sentient being. But as a human being, we can see it and we can realize that we want it, but that doesn't mean that we take it. Why not? Well, we say, well, it's not mine. If I was to take that, the owner would be unhappy. It wouldn't be right. So we have these kinds of concepts and ideas
that can override instinct, the idea of what's right and what's wrong, kindness and empathy for others, for instance. And this is the tool that we cultivate and we train in sila as a refuge and as a means of dealing with unwholesome intention. So in the case of anger, what we can do is we take like the first precept. We say to all the people around us, look, I still experience anger, even or especially with the people I love. This is the truth right now. I have this anger within me. But I promise I will never abuse you physically or verbally because of this anger. And the Buddha, this is called Mahadana. This is called the Great Dana. Because the first thing we need more than anything else in life is we need to feel safe. And through keeping precepts, you give the gift of safety to the people around you, beginning with the first precept. So we're not going from the high ideal and say, I know I'm metta, I'm a Buddhist, we love each other, I'm never going to get angry with you ever again from this day onwards. You can't do that, it's ridiculous, it's beyond human capability. But we can, it's not beyond human capability to say, even though I still have anger, I will not act upon it. I will not speak angry words. That's not repression. That is intelligent suppression of this unwholesome action. पहले वो उन्होंने कहा जो 3 आयाम बताए थे उसमें पहला आयाम आचरण का था, तो उसके बारे में विवरण दे रहे हैं अजान कि हम सब में वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं जो कि पशुओं और पक्षियों में भी होते हैं, और वो जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो हमको स्वाभाविक रूप से ही ऑपरेट करते हैं. जैसे कोई चीज़ हमने अच्छी देखी जो पसंद आई हमको, तो मन में आता है कि मैं ले लूं, तो सामान्य एनिमल इंस्टिंक्ट तो यही होगा कि उसको उठा के ले लेंगे. लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर है, मनुष्य की जो एक एबिलिटी है रिफ्लेक्ट करने की, प्रत्यवेक्षण करने की, तो वो उस पर विचार करता है कि हाँ मुझे अच्छा तो लगता है लेकिन मैं नहीं लूँगा, क्योंकि अगर लूँगा तो जो इस चीज़ का मालिक है उसको बुरा लगेगा, वो पसंद नहीं आएगा उसको ये बात. तो इस तरह से इसी तरह की जो हमारी कैपेसिटीज़ हैं वो हमारे एनिमल इंस्टिंक्ट्स को हावी नहीं होने देती. तो ये हमको अभ्यास करना पड़ता है स्त्री का. तो इसी संदर्भ में कहते हैं कि जो शील का हम विवरण समझते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग में, वो हमारे इस तरह के जो अकुशल इंटेंशन पैदा होते हैं इंस्टिंक्ट्स के कारण उनकी मदद करते हैं. जैसे आपने गुस्से के बारे में कहा कि जो पहला शील है कि मैं किसी को हिंसा नहीं करूँगा, उस बात को समझाने के लिए बता रहे हैं कि हमें मान लीजिए गुस्सा आता है, तो हम जब शील लेते हैं तो उसका मतलब है कि हम एक तरह से लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि हम कभी भी, मुझे गुस्सा तो आता है लेकिन गुस्सा आएगा और फिर भी कभी आपको वाणी से या शरीर से कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा. तो ये एक तरह का एक हेल्दी सप्रेशन है, ये रिप्रेशन नहीं है. हम एक रेस्ट्रेंट कर रहे हैं, संवर कर रहे हैं अपने मानस के ऊपर. ये विचार करना कि हम भगवान के बुद्ध के श्रावक हैं, हम तो गुस्सा नहीं करते, बड़ी मैत्री वगैरह की बात करते हैं, सबको प्यार करना चाहिए, सबसे मैत्री रखनी चाहिए, ये एक आइडियल हो सकते हैं, परफेक्शन हो सकते हैं, लेकिन ये सामान्य ह्यूमन बीइंग के कैपेबिलिटी में नहीं है. लेकिन जो हमारी वास्तविकता है उसके हिसाब से हमें इतनी क्षमता सब में है कि हम शील लें और ये आश्वस्त हों और आश्वस्त करें कि हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे. तो आचार्य बता रहे हैं कि भगवान ने इसी को महादान कहा कि ये एक सुरक्षा का दान हम सबको देते हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें. So that already, if you can fulfill that element of training, then you have saved yourself from
very heavy karma. Nobody falls into a hell realm simply because of mano karma. They do because of kaya karma, vaci karma. So if you can prevent yourself from committing heavy karma through body and speech, you've already done yourself a great service and great service to all the people around you. तो आप आगे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते कह रहे हैं कि हमें बता रहे हैं कि ये जो इस तरह से हमने मन को शिक्षा दी है, अपने को ट्रेन किया है, तो हमने अपने आप को एक बहुत दुष्कर्म से, गलत कर्म से, दुष्कृत्य से बचा लिया अपने आप को। क्योंकि जो भविष्य में जैसे कहा जाता है कि जो नीचे के रेल्म है, हेल रेल्म्स हैं, नरक युग है और दूसरे के युग हैं, वो तभी उत्पन्न होते हैं जबकि मानस का हमारी स्थिति जो केवल मानस की स्थिति बिगड़ने से नहीं होते, जबकि वो मानस की जो अकुशल चित्त की चेतना है वो प्रकट होती है शरीर के या वाणी के कर्मों से, तभी ऐसा होता है। तो अगर हम अपने आप को इतना ट्रेन कर सकते हैं शील को आधार बना के, तो ही हम आपको अपने को इस तरह के निरे लोक के जीवन से बचा सकते हैं। But there's also some thing more profound that goes on, because if every time the intention, the angry intention to hurt, to abuse physically or verbally is recognized and abandoned and not acted upon, that intention over the course of time becomes like a muscle which is not exercised. It atrophies. It becomes weaker and weaker. It arises less often, and when it arises, it's much weaker than it was. So this is the way in which external training of sila affects the mental. It has a mental effect also. And you can observe simply through the refusal to act upon angry impulses, the habit of anger becomes weakened, and in its place, metta starts to arise. Metta starts to naturally replace the angry impulse when that angry impulse is not acted upon. शील के पालन के मात्र से ही एक और बहुत गहन बदलाव आता है कि जब भी हम गुस्से का भाव जागता है और हम उस पर एक्शन नहीं लेते, उसको जानते हैं और एक्शन नहीं लेते, तो ऐसा बार बार करने से जो हमारी आदत है गुस्सा करने की वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे हमारा कोई मसल्स इस्तेमाल न करें तो क्षीण हो जाते हैं, इसी तरह से गुस्सा करने की जो आदत है हमारी वो क्षीण हो जाती है। और इस तरह से बाहर के जो ट्रेनिंग है, शील की जो ट्रेनिंग है, उससे हमारे मानस में परिवर्तन आता है। और जब गुस्से का भाव कम होता है तो स्वाभाविक रूप से ही मैत्री का भाव हमारे मन में जागता है। Most respectfully, Ajahn, may I ask the question? Sorry, I haven't finished with this yet. Sorry, if you could be patient. I need to explain a few more parts of this. So, of course, that is not ending the problem of anger. So, in the second area is the area of the heart, the citta. And in this area, the main principle is of substitution. So, the Buddhist psychology teaches us that it is not possible to have a wholesome and an unwholesome impulse in the mind at the same time. For that reason, we can adopt a policy of replacing unwholesome with wholesome. And the wholesome mental states that directly counteract work on anger are mindfulness, patience, and metta. So these have to be cultivated over a period of time.
mindfulness is particularly important. Mindfulness gives us that we're awake to what's going on in our body and mind. So this does relate to directly to your question. Now, you will observe that before even angry thoughts or angry train of mind starts to appear, there will be some physical manifestation of anger. The physical manifestation in its subtle form precedes the overt mental activity. And if you are sensitive to what's going on in your body, you will notice a particular pattern. And everyone's pattern is a bit different. There are different kind of stress and sensation in certain parts of the body. And if you are mindful, you have like early warning system. You will know, oh yes, I have this feeling here, or the heart just starting to beat a bit more, or I have some tightness in my arm or my hand or my leg, or it can be all kinds of places. But this is your warning. And so you can cut off the anger at a very early level if you are sensitive to sensation in the body and a particular pattern of sensation associated with the arising of anger. तो अब उसका दूसरा आयाम, जो उन्होंने 3 आयाम शुरू में कहे थे, दूसरा आयाम की बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने चित्त को, अपने भावना के जो स्रोत है उसको हैंडल कर सकते हैं. तो कह रहे हैं कि जो भगवान ने जो मनोविज्ञान की बात सिखाई उसमें ये बात समझाई जाती है कि चित्त में कुशल और अकुशल चित्त की वृत्तियां साथ साथ नहीं रह सकती. तो ये जब अकुशल चित्त वृत्ति जागे तो उसको हम कुशल चित्त वृत्ति से बदल भी सकते हैं. तो ये एक ट्रेनिंग की बात है, किस तरह से हम करें. और उसके लिए आप कह रहे हैं कि 3 तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है. 3 तरह की क्वालिटीज हमको कुशल बनानी पड़ती हैं. एक सती, जो माइंडफुलनेस या सजगता, दूसरा धैर्य पेशेंस, तीसरा मैत्री या मैत्ता. तो ये 3 कुशल चित्त की वृत्तियां अगर हम कल्टिवेट करते हैं, इनकी भावना करते हैं, तो ये हमको जब गुस्सा आए उसको सब्स्टिट्यूट करने में मदद कर सकते हैं. सती कैसे काम करती है उन्होंने समझाया कि जब सती प्रतिष्ठित हो तो हमारे को मालूम पड़ता है कि हमारे शरीर में और मन में क्या हो रहा है. तो ऐसे सती के प्रबल होने में जब भी मन में गुस्से का विचार आने लगता है तो उससे शरीर पे जो बदलाव होते हैं वो मालूम पड़ने लगते हैं. तो हर एक के शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं कि गुस्सा आएगा तो इस तरह का शरीर का ये वाला भाग प्रभावित होगा, जैसे दिल की धड़कन बढ़ जाएगी या कुछ कहीं पे टाइटनेस होगी या पेट पे या टांग पे. तो हर एक के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं. और अगर हमारे को शरीर के बारे में जानकारी को लेने की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हम शरीर की संवेदना को ठीक से जान पाते हैं, तो ये जो पैटर्न्स हैं वो हमारे लिए एक तरह से अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करते हैं. कि जैसे ही हमको, क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है शरीर को जानने की, तो जैसे ही ये होता है तो मालूम पड़ जाता है कि गुस्सा आने वाला है. और अगर हम उसको जान जाते हैं तो उससे गुस्से के भाव को हम उसके मैच्योर होने से पहले ही उसको समाप्त कर सकते हैं. So these other qualities of metta, the more that you are consciously and systematically cultivating goodwill for others, then the less likely that ill will arise in the mind. And patience, when the angry impulse does arise, you're aware of it, but it's very strong. You need this ability just to bear with, just to, in Ajahn Sumedho's famous, beautiful phrase, peacefully coexist with the unpleasant. So like patience doesn't mean grit your teeth, Patience means that you can be with it, just at peace with something which is unpleasant. And this is very purifying. To the extent that, as you know, the Buddha said, Kanti paramang tapotitikat. Kanti is the supreme incinerator of defilement. तो मैत्री की बात बताते हुए और कहा कि अगर हम मैत्री का भावना करते हैं तो हम दूसरों के प्रति सद्भावना को
को कल्टिवेट करते हैं, सद्भावना को भावित करते हैं, तो सद्भावना के साथ तो भावना साथ साथ नहीं हो सकती। तो जब मैत्री का अभ्यास ज्यादा करते हैं तो स्वतः ही हमारे मन में दुर्भावना को सद्भावना से बदलने की क्षमता आ जाती है। फिर धैर्य की बात करते हुए पेशेंस की बात की आपने कहा कि जब भी हमारे में गुस्से का भाव जागता है तो हमें इतनी क्षमता होनी चाहिए, अगर हमारे पेशेंस बड़ी है कि हम उसको गुस्से के जागने को भी सहन कर सकें, उसके प्रति भी शांति का भाव रखें। तो बताया कि जैसे अजान सुमेधो कहते हैं, क्या हम अपने जो अनप्लेजेंटनेस है उसके साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? क्या हम हमारे भीतर अनप्लेजेंटनेस है, गुस्सा जाग रहा है और हम उसके साथ कोई उसके प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं रखते, उसके साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। तो आपने जो धम्मपद की गाथा बताई, खांति परमम तपो तितिक्षा, कि खांति जो है इसीलिए कहा गया है कि वो परम तप है, जो कि हमको इस गुस्से के हैंडल करने में बहुत मदद कर सकता है। So there is one further point here I'd like to add, and that is we're all familiar with the word defilement or kilesa. So this is a mental state that sullies or dirties the mind. But although we understand this intellectually, we can only really experience the full meaning when we have some access to the unsullied mind. And this access to the unsullied or the pure mind is provided through samadhi. So once you have some experience of samadhi, you have a new perspective on mental states, on defiled mental states. It's not only you know intellectually, but you feel, like in the case of anger in particular, now you feel this is such a ugly, impure mental state that there is a shrinking away from it. Is what we call hiri. This is the sense of I don't want anything to do. You just you find it ugly and disgusting mental state. So this is something, one of the results of samadhi practice, that your understanding of the nature of defilement becomes much more profound. इस प्रश्न के संदर्भ में एक और बात आप ऐड करना चाहते हैं कि हम सब इन शब्दों से काफी फेमिलियर हैं कि डिफाइलमेंट या क्लेश या जिसको विकार है, अगर वो ये भी समझते हैं बुद्धि के स्तर पे कि ये विकार जो है मन को दूषित करते हैं, लेकिन सचमुच में विकारों का जो क्या कितना दूषित हम मन होता है वो तभी मालूम पड़ता है जब हम विकार मुक्त चित्त की अनुभव कर सकते हैं। और विकार मुक्त चित्त का अनुभव समाधि के द्वारा हो सकता है। तो जब हमें समाधि पुष्ट करती है तो हमें विकारों के बारे में एक नया दृष्टिकोण देखने को मिलता है, हमें मालूम पड़ता है कि कितने मन को बेचैन करते हैं। तो उसमें जो एक उसके प्रति शर्म का भाव जागता है, जैसे हीरी की बात कही, मेंटल स्टेट कही जाती है कि एक मॉरल शेम की फीलिंग आती है, तो उससे हम दूर हटने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है, मालूम पड़ने लगता है कि गुस्सा कितनी गलत चीज है, उसके प्रति डिस्गस्ट का एक निर्वेद का भाव जागता है। तो सचमुच में समाधि का भी एक बहुत अच्छा उससे प्रभाव पड़ता है हमारी समझ में कि विकार किस तरह से हमको परेशान करते हैं। But ultimately the eradication of anger is dependent on the development of wisdom. So in wisdom development we can determine two stages, loosely stage of yoniso manasikara, wise reflection, and the stage of vipassana. So yoniso manasikara is like the step ladder up to vipassana. So in the beginning
we start to reflect on anger. For instance, all of the suffering that we have experienced in our life because of anger, the suffering that we've inflicted on other people because of our anger, the suffering that we've seen in our family and in our communities and in our country and in the world because of anger. And until the sense we feel this, I don't want to add any more to the anger in the world. Yeah. Then maybe we can't stop all the anger. We can't do much about it. But we can say, at least I won't add any more to it. Yeah. And and together with this reflection, we reflect on the beauty of the freedom from anger and the absence of anger. So if we have examples from our great teachers and from great human beings who've been treated in terrible ways and yet are able to forgive and to live without anger and even with compassion for their oppressors. So if you can gather some memories and some recollections of people whose hearts are full of loving kindness and forgiveness, and just how beautiful and inspiring that is, and to aspire to that within yourself. So I said that wisdom is two levels, okay, yoniso manasikara, wise reflection, and vipassana. But yoniso manasikara itself can be divided into two kinds. So you have the yoniso manasikara reflection, which is aimed at the reduction of defilement or the growth of kusala dhammas. So this kind of yoniso manasikara is not like looking at the true nature of things from discursive level, but it's in order to create a new perspective or a new way of looking at life. अब तीसरे आयाम की चर्चा करते हुए आचार्य में बता रहे हैं कि अंततः संपूर्ण निदान पाने के लिए इस तरह के गुस्से से हमको प्रज्ञा को भावित करना होता है, डेवलप विजडम. उसकी भी स्टेजेस बनाई जाती हैं. पहली स्टेज कही जाती है योनिसो मनसिकारा और दूसरी विपश्यना. तो योनिसो मनसिकारा एक तरह से सीढ़ी की तरह काम करती है हमको विपश्यना करने के लिए. तो जैसे योनिसो मनसिकारा का भी एक उदाहरण उन्होंने दिया. जैसे कि हम गुस्से की बात कर रहे हैं तो हम विचार करते हैं कि गुस्से से कितना दुख फैलता है, कितना दुख हमें हुए, कितना हमने दूसरों को किया, कितना समाज में, कितना हमारे परिवार में, कितना विश्व में गुस्से के कारण कितना दुख फैला है. और ये बात को समझते हुए हम एक निर्णय लेते हैं कि मैं दूसरों के गुस्से के बारे में तो कुछ नहीं कर सकता, कम से कम मैं तो अपना गुस्सा ना करूं और इस गुस्से की परिस्थिति से जो दुख होता है उसकी बढ़ोतरी ना होने दूं. तो इस तरह से और फिर हम दूसरी तरह इसके अपोजिट रिफ्लेक्शन करते हैं कि जब गुस्से से हमें मुक्ति मिलती है, गुस्सा नहीं होता, तो चित्त कितना सुंदर होता है. और याद करें उन लोगों को जिन्होंने विषम परिस्थिति में भी गुस्सा नहीं किया. अपने महान आचार्य हैं, महान मनुष्य हैं, या जो उनको बहुत विपरीत परिस्थिति में भी जब उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया तब भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया और करुणा ही जगाई. इस तरह की कहानियां याद करके, इस तरह की चीजें याद करके, चाहे वो भगवान बुद्ध से ही संबंधित हो, तो हमको मालूम पड़ता है कि ऐसे लोग भी रहे हैं और हो सकते हैं जिनमें मैत्री का इतना स्वभाव है कि वो गुस्सा बिल्कुल नहीं करते. और वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन बनता है कि मैं भी ऐसा बनूं. तो इस तरह से ये जो योनिसो मनसिकारा है ये हमको अकुशल को कम करने और कुशल को बढ़ाने में मदद देता है. हालांकि इसमें जो योनिसो मनसिकारा का दूसरा जो प्रमुख आयाम सामान्यतः माना जाता है कि जो जैसा है उसको वैसा देखें, ये बात नहीं हो रही. लेकिन फिर भी इस तरह के चिंतन से जो अकुशल की प्रवृत्ति कम होती है और कुशल की प्रवृत्ति बढ़ती है.
But the most powerful kind of reflection is looking at what exactly makes you angry and why do you get angry. And if you say, I get angry because this person does this, one particular thing, then we can say, or you can reflect that in that case, if it's the action of that person, do you get angry in the same way whoever acts in that way? For instance, between someone you don't like, someone you love, someone you don't know, would you have exactly the same reaction in either case, in any case? And what about your own mental state at the time? You say, this action makes me angry, but if you've just been meditating and you're very peaceful, or on another occasion where you're very agitated and stressed out, would the anger be the same? Probably not. So we can reflect on the various variables and things that condition anger in order to see it's not a fixed thing. And then we look and why exactly do some things make us angry? And we look in terms of Four Noble Truths, and we see craving, and we see we're not getting what we want. It's frustrated desire. So we say, or we have this idea, she should be like this, she should not do that, he should not be this way. So we have these ideas, how we want things to be, and then we get angry when they're not the way we want them to be, or people are not how we want them to be, they don't act the way we want them to act. So it's coming from our desire and the frustration of that desire. So this is a very important yoniso manasikara kind of reflection. उसी को आगे समझाते हुए आप बता रहे हैं कि अब हम योनिसो मनसिकारा में ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किस कारण से ये देखने की कोशिश करते हैं किस कारण से ये गुस्सा आ रहा है. तो सामान्यतः अगर देखते हैं तो हमें लगता है कि इस मनुष्य के कारण आ रहा है, इस प्राणी के व्यवहार जो है उसके कारण आ रहा है. तो फिर हम उस पर अगर रिफ्लेक्ट करें कि क्या हर आदमी जो ऐसा व्यवहार करता है, मुझे हर आदमी पे उसी तरह से गुस्सा आता है, चाहे वो मेरा प्रिय हो, अप्रिय हो, जानकार हो या जानकार ना हो. तो जब हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि ऐसा नहीं है, किसी पे आता है, किसी पे गुस्सा नहीं आता है. फिर और रिफ्लेक्ट करें कि क्या मेरी मन स्थिति का गुस्से के प्रादुर्भाव में कोई योगदान है कि मान लीजिए मैं अगर ध्यान करके उठ रहा हूँ और वैसी स्थिति होती है, और तो क्या मुझे उतना ही गुस्सा आता है जितना तब आता है जब मेरा मन पहले बेचैन है. तो इस तरह से जब हम जो दूसरे कारण है हमारा गुस्सा बढ़ने के, हम जानते हैं कि कुछ कारण हमारे आंतरिक कारण भी हैं जिनके कारण गुस्सा आता है. और ये जिस तरह से अल्टीमेटली जो रिफ्लेक्शन हमको सचमुच में मदद करता है इस गुस्से का भावना को समझने में, वो चार आर्य सत्यों पे इसका रिफ्लेक्शन है कि हम देखें कि किस कारण से चार आर्य सत्य के अनुसार किस कारण से, क्योंकि गुस्सा भी एक तरह का दुख है, तो किस कारण से हमको ये अनुभव हो रहा है दुख का. तो स्पष्ट दिखता है अगर हम अप्रोप्रिएटली इन्वेस्टिगेट करें कि जो क्रेविंग है, तन्हा है, उसके कारण हमको, और जो तन्हा हमारी पूर्ण नहीं होती, फ्रस्ट्रेटिंग डिजायर, जैसे अजान कह रहे थे कि हमारी डिजायर है वो फ्रस्ट्रेट हो गई तो इसलिए गुस्सा लगता है. कई बार हमको लगता है कि इस आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा क्यों है, ऐसा ना हो तो भी हम समझते हैं हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही और हम उस कारण से गुस्सा कर रहे हैं. तो वही भगवान की जो वाणी है वो बार बार हमारे कानों में गूंजती है कि जो तन्हा है और वो तन्हा का पूर्ण ना होना ही दुख का कारण है, और यही गुस्से का भी कारण है. So the ultimate freedom from anger comes through vipassana, through seeing that every aspect of body and mind
is not me, not mine, and that identification with the five khandhas leads to sense of self and others, and conflict. So I'm not going to go into this more profound level right now, because I want to stress the other areas of practice, and I just want to really emphasize the point that in the practice of Buddha's teaching, the meditation technique we can say is the heart or is the crown jewel, but it is not by itself, a magic bullet that will destroy all suffering. There has to be a lot of hard work put into our conduct and developing good communication skills, and developing barami in daily life, and helping others, and development of the learning skills for dealing with unwholesome dhammas and for developing wholesome dhammas, developing wise reflection. It's a whole complex education system, of which the meditation is important, but it shouldn't be seen as the one and only thing that will sort out it's a bit like people feel like if you fall in love and you find the perfect person, then all the other areas of your life will just sort of fit into place, and they don't, basically. And similarly, if you just think you get your meditation together, then every other area of your life will all fit into place. It won't either. It's a lot of work. Relationships, even with loved ones, are hard work, and the Eightfold Path is hard work. Yeah. तो अजान ने आगे बताया कि जो अंततः जो अल्टीमेट फ्रीडम है हमारी को गुस्से से या कई विकारों से, वो विपश्यना के द्वारा ही मिलती है। और विपश्यना का अर्थ है हम ये समझें कि हमारा जो कोई भी मनोविकार है या शरीर है या मन है, वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। और जो पांच खंडों से हमारी तादाद में बना हुआ है, वो सत्य नहीं है, वो दुख का कारण है, जो उससे कि मैं का भाव जागता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं इस प्रोफाउंड चर्चा में अभी नहीं जाऊंगा। मैं वो हमको ये बताना चाहते हैं, एम्फसाइज करना चाहते हैं, शायद वो जानते हैं कि हमारे मन में ये भाव है कि साधना करने से सारे दुख दूर हो जाएंगे, कि भगवान की टीचिंग की जो है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। ये हमको उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाव तो ध्यान करने का भी है, लेकिन वो कोई मैजिक बुलेट नहीं है, एक ऐसी वो मैजिक नहीं है जिससे कि हम सारे दुखों से दूर हो जाएंगे। हमको इसके सारे आयाम पूरे करने होते हैं। हमारा आचरण ठीक हो, शील का पालन हो, हमारी बात करने की वाणी में संयम हो, हमारी पारमियां पुष्ट हो, दूसरों को मदद करके पारमी पुष्ट करें, और हमारी क्षमता हो जो सिक्खा पदम बात कहते हैं सीखने की, वो सब सीखें जो भगवान बार बार कहते हैं कि किस तरह से हम अकुशल प्रवृत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं और कुशल प्रवृत्तियां बढ़ा सकते हैं, और योनिसो मनसिकार सीखें, वाइज रिफ्लेक्शन को बात समझें। और ये भाव कई बार वो बताते हैं कि साधकों में आता है कि मेडिटेशन ही सब कुछ है। बता रहे हैं वो ऐसा ही है जैसे किसी को लगता है कि जब मेरे को एक परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा होता नहीं है। और सचमुच में जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है उसके सारे आयाम हमको फॉलो करने चाहिए, और उससे ही हमारी साधना में पूर्णता आती है। So finally, I'm ready for your question. She passed on to me, so she got her answers. I gave you the answer. Okay, good. I have some questions. Yes. Only if you have time, so whichever you can answer conveniently. So my first question to you is like, we have to be kind and compassionate, cultivate those qualities. But sometimes we see people in front of us who have little lower level of consciousness, and they kind of start exploiting our virtuous qualities. So in such a situation,
what should we do? Should we just behave in a similar way? And we can clearly see people exploiting us or taking advantage of our like meekness or kindness. So what should be done in such a case? And my another question in respect to this is, how do we all encounter difficult and toxic people in our life who are kind of causing us harm and hurt, and we are forbearing that with patience and tolerance and not reverting back in a revengeful way. But at a point, these things can also create a psychological impact on our own mind, and especially if some people are really oversensitive, they have a lot of empathy for others, they don't revert back, but they suppress their emotions, and that causes a psychological impact which can lead to diseases like depression. So should one keep on facing that, or try to just walk away from that situation or relationship? And especially the things, even sometimes people have such people at their home. So what should be done in such a scenario? Okay, maybe I'll try to answer a bit more succinctly my previous question. A point that I've been trying to stress today is that this is a holistic teaching, meaning one in which we cannot just extract one particular virtue. So, and this leads to so much misunderstanding of Buddha's teaching. For instance, the teaching of contentment. So there's been a lot of criticism of Buddhism teaches people to be content. And then, well, how will we ever get anything done in the world if we say everything's okay already? But if you go to the words of the Buddha himself, you see the Buddha is very careful that whenever he speaks about contentment, he also speaks about effort and diligence and hard work and all these kinds. So the Buddha is saying the kind of contentment that I'm teaching is not a contentment that leads to laziness or passivity. But because people don't go to the original source, or they just take out just one word somewhere, then they're mistaken. So the fact that we don't indulge in anger or revenge or treat other people badly because they treat us badly, that doesn't mean we just allow people to take advantage of us. If you allow people to take advantage of you, you're being very uncompassionate, because you are, as it were, conniving in or supporting somebody creating bad karma. If that person is treating you badly, they are creating bad karma for which they will suffer in the future. So you should try to help them out and not let them do that. And it's not a matter of allowing people to behave badly, but a simple observation that, as the Buddha said, anger is never resolved through anger. There's just no end to it. And there is a better way. And when the mind is free from anger, then the mind is creative. The mind can come up with options. When the mind is angry, it's just in a rut. It's blind. There's very limited options. But when you step out of that rut of anger, you can see, well, maybe I should do this, maybe I should do that, maybe I should speak, maybe I should draw back, maybe I should walk away. You can't tell this before. There's no kind of plan. But you have that flexibility of mind to do what is appropriate. Yeah. आपका प्रश्न था कि हम को सिखाते हैं कि किस तरह से हमें करुणा और मैत्री का भाव रखना चाहिए। तो इस बात का, इस हमारी मनोस्थिति का लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और हमको एक्सप्लॉइट करते हैं।
तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। और इसी संदर्भ में दूसरा प्रश्न था कि कई बार कई लोगों का मानस इतना दूषित होता है कि उससे हमारे को काफी कष्ट होता है और हमको कहा जाता है कि शांति का बात रखिए, फॉर वी शुड बी, धैर्य रखना चाहिए, जो बदला नहीं लेना चाहिए। तो इस कारण से जो लोग खासतौर पर सेंसिटिव होते हैं उनके मन में बहुत एम्पैथी का भाव रहता है, तो वो जब ऐसी परिस्थिति में अपने इमोशंस को दबाते हैं तो उससे कई बार डिप्रेशन हो जाता है। और अगर ऐसी परिस्थिति हो कि घर में भी ऐसी परिस्थिति हो कि कुछ लोग ऐसा बहुत दूषित व्यवहार करते हो, तो क्या करना चाहिए? क्या हमको परसिस्ट करना चाहिए या वहां से उस परिस्थिति से बदल हट जाना चाहिए? तो बंते जी उत्तर दे रहे थे कि कि मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि जो भगवान की शिक्षा है वो एक होलिस्टिक ट्रेनिंग है, उसमें सारे पूरे आयाम हैं। हम उसकी शिक्षा में से एक अंश उठा के जब लेते हैं तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है, उससे गलतफहमी हो जाती है। जैसे आपने उदाहरण के लिए बताया कंटेंटमेंट का, कि संतोष की बात की। कई बार लोग ये कहते हैं कि अगर हम संतोष कर लेंगे जिस जैसी परिस्थिति है तो फिर तो संसार में कुछ होगा ही नहीं। तो बंदे जी बताते हैं कि भगवान की वाणी में ऐसा नहीं है। वो जब जब संतोष की बात करते हैं तो उसके साथ साथ वो वीर्य और सजगता की बात भी करते हैं, डिलीजेंस की बात करते हैं। तो भगवान की कंटेंटमेंट वो नहीं है जिससे कि पैसिविटी हो और आदमी निष्क्रिय हो जाए, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम एक शब्द उठाते हैं और जो ओरिजिनल सोर्स है भगवान की, जो मूल वाणी है, उसको नहीं पढ़ते तो हमको गलतफहमी हो जाती है। तो इसी तरह से आपने इस प्रश्न के उत्तर संदर्भ में बताया कि इसका हमको कभी भी किसी दूसरे को हमारा को एक्सप्लॉइट करने का नहीं करना, अलाउड नहीं करना चाहिए कि कोई हमारी भलाई का, हमारे अच्छे मान का, भल मानस का दुरुपयोग करे। तो उन्होंने उसका आयाम बताया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये दिखाता है कि हमें करुणा नहीं है, सचमुच में करुणा नहीं है, क्योंकि हम उस आदमी को दुष्कर्म करने के, दुष्कृत्य करने की से रोक नहीं रहे हैं। और अगर हम बार बार उसको अलाउ कर रहे हैं तो वो अपने दुष्कर्म कृत्य बढ़ा रहा है, अकुशल कर्म बढ़ा रहा है और हम उसमें मददगार हो रहे हैं। तो अगर हम सचमुच में धर्म को ठीक से समझते हैं तो हम उसको ऐसा करने नहीं देंगे। तो जैसे आपने कहा कि ये बात तो सर्वविदित है कि जो गुस्सा है उससे गुस्से का प्रत्युत्तर गुस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होता। और हम अपने अनुभव से जानते हैं कि जब हमारा मन गुस्से से मुक्त होता है तब हमारे सामने कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं कि क्या करें, कि हम उस परिस्थिति से बदलें, अपने आप को बदलें या वहां से उठ के चले जाएं। इसके लिए कोई रेडीमेड आंसर नहीं हो सकता। जब हमारा चित्त गुस्से से बगैर के दुर्भावना से मुक्त होगा तब हमारे सामने ऑप्शंस अपने आप आ जाएंगे। होता सामान्यतः ये है कि क्योंकि मन में बहुत गुस्सा है तो मन की जो सोचने की क्षमता है वो क्षीण हो जाती है और हमारे सामने ऑप्शंस नहीं प्रकट होते कि हम क्या करें, और उससे बेचैनी बढ़ती है। Okay, I'll answer your second question a bit later on, because we were going to walk to the park first and we'll find a place to sit down there. But before we go to the park, I'd like to say a few words about walking meditation. So, आप बता रहे हैं कि अभी दूसरा भाग जो इसका प्रश्न का, उसका उत्तर जब हम पार्क में अभी जाएंगे तो उस रास्ते में चलते हुए बताएंगे, वहां बैठ के बताएंगे। तभी वो हमको वॉकिंग मेडिटेशन के बारे में दो शब्द कहना चाहते हैं। So the first thing is that walking meditation is just so enjoyable. It's just a wonderful thing to do. पहली बात ये कि जो वॉकिंग मेडिटेशन है वो बहुत चित्त प्रसन्न करती है और बहुत ही अच्छी चीज है, करनी है काम। Okay, so a few more advantages of walking meditation. One, it means that you can extend the amount of time that you are meditating quite easily. So, many of you have done this, many Goenkaji retreats where you're sitting many hours a day, but it's still quite a stretch and quite taxing. But even for beginners, you can be able to do walking meditation for 1 hour, 1.5 hours, even 2 hours without any great difficulty. So as one
If you are alternating sitting and walking, you could sit for an hour, walk for an hour, sit for an hour, walk for an hour, and have a 4-hour meditation session, without, like being, wow, it's not tough, it's enjoyable. And apart from being an alternative, as an alternative, there are certain times of the day when walking is better than sitting and is more profitable, particularly, say, straight after a meal. It's very tough sitting, isn't it, just after you've had your meal? And walking is a good idea. It's good for health as well. Also, if you have some physical, you have some illness, which makes sitting difficult, and it can be very discouraging if your practice is totally based on sitting, and suddenly you find you can't sit anymore. And what can you do? So it makes sense to have some skill in meditating in other postures. So walking is a posture which is immediately accessible, and it also provides slightly different results or advantages. One observation is that walking, the kind of samadhi, mindfulness that arises from walking, can more easily be integrated into daily life than from sitting. Particularly if we walk in the style of Ajahn Chah, we're more or less normal walking pace. Now, if you think in your daily life how much walking you do in short bursts, up and down stairs from one building to another building, from your car or your vehicle to a building and back again. And you can just insert these periods of walking meditation into those short 2 or 3 minute walks where you have no need to talk to anybody or to attend to any other business. So it's very helpful in maintaining mindfulness during daily life. The walking meditation, once mastered, lends itself to the wisdom reflection practices because the rhythm of walking in itself, it brings up energy. And once you've tamed the mind and you can focus that thinking energy, you can develop these investigation of the 3 characteristics in a very deep way. Sorry, go ahead. तो वॉकिंग मेडिटेशन के बारे में आपने संक्षेप में समझा रहे हैं हमें कि उसके कितने लाभ होते हैं। वो बता रहे हैं कि हम अपना जो साधना का समय है उसको बड़े आराम से बढ़ा सकते हैं वॉकिंग मेडिटेशन को साथ में जोड़ के। सामान्यतः हम लोग जो साधना शिविर में जाते हैं बैठ के कभी लंबे समय तक ध्यान करते हैं, और लेकिन जब हम उसको अल्टरनेट करें, अगर 1 घंटा बैठें 1 घंटा चलें, इस तरह से 4 घंटे भी लगातार अगर निकल जाएं तो कोई हमको थकान या परेशानी नहीं होती। जबकि अगर इतना समय एक ही पोस्चर में बैठे बैठे करना चाहें तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो और वो आसान भी होता है और एंजॉयबल भी होता है, क्योंकि चलने से ऊर्जा आती है। और एक और बात आपने बताई कि कुछ समय दिन के ऐसे होते हैं जो उस समय की सिटिंग मेडिटेशन करना उपयुक्त नहीं है। जैसे अगर भोजन के बाद हम बैठ के ध्यान करते हैं तो सामान्यतः आलस से आने लगता है, लेकिन अगर वॉकिंग मेडिटेशन करेंगे तो लाभदायक होता है और वो सेहत के लिए भी ठीक रहता है।
और कुछ लोगों को अगर शारीरिक कष्ट है कि वो लंबे समय तक बैठ नहीं सकते तो बहुत डिस्करेज हो जाते हैं, तो उनके लिए भी वॉकिंग मेडिटेशन करना और दूसरे पोस्चर में मेडिटेशन करना एक सहज सुझाव दिया बनते जी ने। और एक खास बात और बताए कि ये ऐसी जो वॉकिंग मेडिटेशन ऐसा सुझाव है जो हमेशा हमारे को एक्सेसिबल होता है, और हम जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान सामान्य जीवन में जा रहे हैं, बिल्डिंग के सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे चढ़ रहे हैं, जब हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे समय पे वो जो छोटे छोटे टाइम इंटरवल हैं उनको भी हम साधना में बदल सकते हैं। और खास तौर पर अगर हम अजान चाह जैसे समझाते थे साहब कि हम सामान्य पेस से ही जैसे सामान्यता चलते हैं बिल्कुल वैसे ही चलें, उसको बदले ना, तो फिर वो इंटीग्रेशन में समान हमारे जीवन के साथ माइंडफुलनेस को, सजगता को, सती को इंटीग्रेट करने में बहुत मदद होती है। और अब ये भी बताया कि जो समाधि वॉकिंग मेडिटेशन से भी काफ़ी अच्छी तरह से पुष्ट हो सकती है। इस वॉकिंग मेडिटेशन को हम प्रज्ञा के प्रैक्टिसेस से रिफ्लेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उससे एक तो वीर्य जागता है, ऊर्जा जागती है, और हम उसको अपनी सोचने की क्षमता को, ये 3 लक्षण को इन्वेस्टिगेट करने में भी लगा सकते हैं। Okay, so normally in the forest monasteries we would have a path of some 20 to 30 paces, and you have a clear mark for the beginning and the middle and the end of the path. So if, for instance, your path is, let's say, 24 paces, then you have a mark at 12 paces. And these 3, the beginning, the middle and the end, are opportunities just for you to check that you're still mindful of your object. And so if you do lose your mindfulness, then the idea is that it will not be for more than 12 paces maximum, because you're coming to your checkpoint, beginning, middle, end. And you can stop at the end of the path, just slowly turn and then gather your mind before walking back. Walking more or less normal pace with the hands in front, clasped, and the eyes looking down a meter or so ahead. And so Apan will now demonstrate. Okay, so thank you. So there's not actually, a really fixed speed, and that's quite a comfortable walking pace for meditation. But you can walk a bit faster than that if it's more comfortable for you. Now, if you're walking in the park or you're walking outside, then you don't have these markers, of course, but what you can do is you can just observe some markers, natural markers by the side of the road. It might be a tree, it might be a building, and so you're chopping this a long walk up into chunks of maybe 15 paces or so, to be able to come back and to check at regular intervals. तो आप बता रहे हैं कि जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्रीज है वहाँ पे वॉकिंग मेडिटेशन के लिए एक स्थान बने हुए होते हैं, 20 से 30 कदम का दूर स्थान बना होता है, और उसमें शुरू में और उसके अंत में और बीच में निशान लगा होता है, ताकि उस पर चंक्रमण करते समय, चलते समय हम ये चेक कर सकें कि हमारी सजगता बनी हुई है, जो हमारा ध्यान का आलम्बन है उसमें मन टिका है कि नहीं। तो ऐसे जब बार बार चेक करते हैं तो जितना समय 12 पेस कदम चलने में लगता है, उससे ज़्यादा समय तक हमारी सती विशंकृत नहीं हो सकती, क्योंकि हम बार बार उसको चेक कर रहे हैं।
और चलना भी एक नॉर्मल पेस से है, आंखें नीचे रख के और चले, जैसे अर्पण ने हमें चल के यहाँ पे दिखाया। और उन्होंने बताया कि स्पीड भी फिक्स नहीं है, आप चाहें तो जैसे अर्पण चल रहे तो उससे थोड़ा तेज भी चलना चाहें तो चल सकते हैं, लेकिन जितना सामान्य हमारा चाल है उस तरह से भी चल सकते हैं। और लेकिन जब पार्क में या बाहर चलना हो तो वहाँ पे कोई मार्कर नहीं है, तो हम जो सामान्य नेचुरली वहाँ मार्कर होंगे, कुछ पेड़ होगा, कोई बिल्डिंग होगी या कोई पत्थर होगा, तो उसके माध्यम से भी हम अपने मन को इंगित कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, और बीच बीच में उसको चेक कर सकते हैं कि हमारी सजगता बनी हुई है, मन भटक तो नहीं रहा है। So today we're doing just a short walk to the park and back. So we're going to do a metta meditation for the walk. So this is how we do metta meditation, or this is one kind of metta meditation. So as you're walking, you have your first phrase that you recite in your mind is, "May I be well." Okay, so with your footstep, "May I be well." This is number one. Number two, "May I be kind." May I be kind. And the third one, "May I be wise." May I be wise. And the fourth one, "May I be free." May I be free. So free of all suffering and free of all defilement. So there are various ways that we can do this. So some people can like just to do one after another. May I be well, may I be kind, may I be wise, may I be free. Or you can just take one and just keep on one. Or you can start off with the first one, may I be well. The thing to remember is that you're trying to bring up the feeling. It's not just saying the words, the sense of wellness, the sense of kindness, the sense of wisdom, sense of freedom, bringing up this emotion together with the words. And you can, for instance, do "May I be well, may I be well," and as it starts to get a little bit weaker, then you can switch to the second one. "May I be kind, may I be kind." And then if it starts to be hard to hold that in your mind, then go on to wise, then go on to free. So there you can experiment. You can just stay with one of those four, or have one after another, or one as far as you can go, and then second one, third one, fourth one, and then go around in this way. And then the second person is the benefactor. So now the second one is, may he or may she be well. May he or she be kind, be wise, and be free. And then a loved one, and then a neutral one, and then if you're really good, that's the enemy. But you can, that's maybe take some time. So you're not going to be able to do this all in the time, but this is a kind of like big picture of the kind of things you can do with walking metta meditation. तो बंतन जी आज हमको एक वॉकिंग मेथा मेडिटेशन के बारे में बताया। आपने देखा होगा, बता रहे थे कि हम चलते हुए भी मन में ये भावना ला सकते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं करुणामय हूँ, मैं प्रज्ञावान बनूँ, मैं मुक्त बनूँ। तो ये चार इन्होंने अपने आयाम बताए, और हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं कि कौन सा हमको पहले करना है। हम एक सीक्वेंस में करें, या पहले एक को करें फिर दूसरे को करें। तो मुख्य बात यह है कि सिर्फ शब्द बोलने नहीं है, अपने मन के अंदर वो भावना लानी है, वो फीलिंग्स आनी चाहिए कि ठीक अच्छा होना भावना हो, करुणा की भावना है, या
समझदारी की भावना है, मुक्ति की भावना है, तो वो भावना लाते हुए हम इस तरह से चल सकते हैं। तो शुरू में तो हम अपने लिए करते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे कल्याण मित्र है, वो पुरुष है या स्त्री है, उसके लिए कर सकते हैं। फिर जिनको जो हमारे प्रियजन हैं उनके बारे में, फिर ऐसे लोगों के बारे में जो कि जिनके प्रति हमारा कोई न द्वेष है न राग है, न्यूट्रल है। और फिर सचमुच में अगर हमारी क्षमता बढ़ती है तो जिनके प्रति हमारे मन में दुर्भाव है उनको भी याद करके हम कह सकते हैं, may he be well, may he be kind, may he be wise, may he be free. And of course, if we want to, all sentient beings, then may they be well, may they be kind, may they be wise, may they be free. और अंत में सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी प्रसन्न हों, सभी प्राणी करुणामय हों, सभी प्राणी प्रज्ञावान हों, मुक्त हों, ये भाव भी ला सकते हैं। So we'll walk now. I don't think we walk in a line or a column, because I think maybe they call the police. So we just make our own way, but just we'll be with your metta the whole way to the park, and we'll do one circuit of the park and then find a place to sit down.